वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि सदर मादुरो और उनकी अहलिया को लेकर अमरीकी बहरी जहाज न्यूयॉर्क की तरफ रवा दवा है। मादुरो और सेलिया को चंद घंटों पहले अमरीकी फौज ने वेनेजुएला पर हमला करके पकड़ा है। अमरीकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ से फ़ोन पर बात करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई फ्लोरिडा में अपने फौजी जर्नलों के साथ बैठकर एक टीवी शो की तरह लाइव देखी है। ट्रंप ने कहा कि मादुरो पर मैनहट्टन की अदालत में मनशियात और असलहे की स्मगलिंग का मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला पर अब किसकी हुक्मरानी होगी ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन ये बात तय है कि वेनेजुएला के हुक्मरान का फैसला अब अमरीका करेगा। ट्रंप ने कहा कि वो ये चांस नहीं ले सकते कि कोई ऐसा हुक्मरान वेनेजुएला में आए जो सारे काम को उल्टा कर दे। इसी दौरान अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN ने ज़राए से खबर दी है कि मादुरो और उनकी अहलिया सेलिया को उनके बेडरूम से पकड़ा गया है। ज़राए ने CNN को बताया कि दोनों मियाँ बीवी को उनके बिस्तर से खींचकर कमरे से बाहर ले जाया गया। एक और अमरीकी मीडिया नेटवर्क CBS ने रिपोर्ट किया है कि मादुरो के हाई सिक्योरिटी कंपाउंड पर अमरीकी जासूसी के इदारे CIA ने नजर रखी हुई थी। मादुरो और सेलिया को पकड़कर एक फौजी हेलीकॉप्टर में वहां से ले जाया गया। वेनेजुएला की हुक्मरान पार्टी के लीडर नाहोम फर्नांडिस ने बताया कि मादुरो एक फौजी अड्डे पर बने घर में थे। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि मादुरो जिस घर में थे वो किसी किले से कम नहीं था। वहां फौलादी दरवाजे थे। छुपने की एक ऐसी जगह थी जिसके चारों तरफ फौलादी दीवारें थी, लेकिन ऑपरेशन इतनी तेजी से किया गया कि मादुरो को उस जगह छुपने की मोहलत ही नहीं मिली। ट्रंप ने बताया कि मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर से कोई शय टकराई और इस हादसे के नतीजे में कुछ अमरीकी जख्मी भी हुए हैं। ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला के सदर के खिलाफ ऑपरेशन की खुफिया तैयारी दिसंबर में ही कर ली गई थी। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फौजी वेनेजुएला में कार्रवाई करके सदर मादुरो और उनकी अहलिया को उठाकर ले गए। अमरीकी फौज ने दारुल हुकूमत कराची के कई अहदाफ को निशाना बनाया। फौजी हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया। वेनेजुएला के हुकाम ने कहा कि अमरीका ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया है जो खुली जारहियत है। वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान और नोबेल अमन याफ्ता मारिया कोरेना ने कहा है कि वेनेजुएला में अवामी हुकूमत का वक्त आ गया है और मादुरो को अब बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इंटरनेट पर वेनेजुएला के अवाम के नाम एक खुले खत में अपोजिशन लीडर की मुल्क के नए लीडर के तौर पर हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब वेनेजुएला में अमन होगा, सियासी कैदी रिहा होंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात में हकीकी कामयाबी वेनेजुएला ने हासिल की थी। उन्हें फौरी तौर पर अपनी आईनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों में बरतानिया शरीक नहीं था। उन्होंने हमेशा कहा है और वो इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सर कीर स्टारमर ने कहा कि वो जल्द अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई पर बात करेंगे। इस वक्त वो इस हकीकत को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि वेनेजुएला पर किए गए अमरीकी ऑपरेशन में बरतानिया किसी भी शक्ल में शरीक नहीं था। सर कीर स्टारमर ने कहा कि वो ट्रंप के अलावा इस मामले पर जल्द इत्तेहादी ममालिक से भी बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को तशवीशनाक असरात का हामिल करार दिया। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अमरीका के फौजी इक़दाम पर मुस्तरब है। उनका ख्याल है कि खित्ते के लिए इस इक़दाम के असरात परेशान कुन हो सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि वेनेजुएला में सूरत हाल जो भी हो, मगर इस पेशरफ्त से एक ख़तरनाक मिसाल कायम हुई है। एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम फरीकों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर समेत बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुकम्मल एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल को इस बात पर शदीद तशवीश है कि बैनुल-अक़वामी क़ानून के ज़वाबित का एहतराम नहीं किया जा रहा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी एहतजाज की शिद्दत कम होने लगी है। एहतजाज फारिस हमदान और दश्त समेत महज चंद शहरों तक महदूद हो गए हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने एहतजाज करने वालों के मुतालिबात को जायज़ करार दिया, लेकिन कहा कि करेंसी में उतार चढ़ाव के पीछे दुश्मन का हाथ है और ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद ने सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को ख़त लिखकर अमरीकी धमकी पर एहतजाज किया है और कहा है कि अमरीकी सदर का बयान अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़ानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। ईरानी अवाम दाखिली उमूर में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने कल कहा था कि अगर ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने आगे आएगा। इसी दौरान साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और साबिक डायरेक्टर CIA माइक पोम्पियो ने इंकशाफ किया है कि ईरान में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट एहतजाज करने वालों के शाना बशाना सड़कों पर मौजूद हैं और वो एहतजाज करने वालों और मोसाद एजेंट्स को साल नौ की मुबारकबाद देते हैं। माइक पोम्पियो ने कहा कि ईरान की हुकूमत मुश्किल में है। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी एहतजाज की शिद्दत कम होने लगी है। एहतजाज फारिस हमदान और दश्त समेत महज चंद शहरों तक महदूद हो गए हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने एहतजाज करने वालों के मुतालिबात को जायज़ करार दिया है, लेकिन कहा है कि करेंसी में उतार चढ़ाव के पीछे दुश्मन का हाथ है और ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा।
अभी आपको बताएं वेनेजुएला के मामले पर अब से कुछ देर बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगे हैं। वाइट हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो सवालों के जवाब भी देंगे और साथ ही साथ जो भी सूरत हाल बनी है वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के बाद उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ताज़ा तरीन अब से पहले कुछ देर पहले की अपडेट ये है कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को लेकर अमरीकी बहरी जहाज़ न्यूयॉर्क की तरफ रवा दवा है। और अब से कुछ देर बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर को पकड़ने की जो तस्वीर है वो रिलीज़ भी कर दी। ये तस्वीर आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस को पकड़ने के बाद की तस्वीर रिलीज़ कर दी है, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और आपको ये बताएं कि उनको और उनकी अहलिया को लेकर अमरीकी बहरी जहाज़ न्यूयॉर्क की तरफ रवा दवा है। चंद घंटों पहले अमरीकी फ़ौज ने वेनेजुएला पर हमला करके इन्हें पकड़ा। जैसे ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे वो आपको बराह रास्त दिखाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कराची के इलाके 𝐈𝐧𝐯𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧 में मैनहोल से गुज़श्ता रोज़ 4 लाशें मिलने के वाक़े की तहक़ीक़ात में पेशरफ्त हुई है। मक़तूला अनीला के लवाक़ीन डॉक्स पुलिस स्टेशन पहुँच गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान। जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ एक दिलखराश वाक़या पेश आया था। 𝐈𝐳𝐳𝐸 के करीब एक मैन होल से 4 लाशें मिली थी। उनकी शनाख्त हो गई है। एक जो उनकी वालदा थी वो अनीला के नाम से हुई, जबकि उसमें 3 उनके बच्चे शामिल हैं। मैं इस वक्त डॉक्स थाने में मौजूद हूँ। मक़तूला हैं, उन छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए जो रब्ता नहीं हुआ। इससे पिछले हफ्ते मेरी बात हुई थी सिस्टर के साथ, तो उन्होंने यही कहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ, बच्चे वगैरह थोड़े बीमार हैं, बस इस मुतालिक बात हुई थी और कोई बात नहीं उनसे। परसों गया था उनके घर पे, तो घर पे ताला वगैरह लगा हुआ था। मैं काम पे भी जाके उनको फ़ोन वगैरह किया तो उनका फ़ोन नहीं लगा। घर पे तो ताला था, तो मैं चौकीदार के पास गया तो मैंने उनसे पूछा। उसने मुझे कहा कि नहीं, ये घर खाली हो गया है। अब घर वो किराए का घर था उनका। अच्छा, ये अनीला साहिबा के लिए बताया कि गालिबन डिवोर्स हो गई थी इनकी शौहर से, तो क्या शौहर से कुछ ऐसी नाचाकियाँ थी? मेरी बहन ने कभी ऐसी कोई बात में से नहीं की कि मेरे को ऐसा कोई फील हो रहा है कि मुझे कोई मार देगा या मुझे ऐसा कुछ कर देगा। 30 तारीख को ये पूरी फैमिली घर से बाहर निकली थी। तहम गुज़िश्ता रोज़ उनकी लाश मिली 𝐈𝐳𝐳𝐸 से। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस केस की तमाम ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है ताकि हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें। This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. And if you think about it, we've done some other good ones like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently in an operation known as Midnight Hammer, all perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, it's J. Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. You rarely see anything like it. You've seen some raids in this country that didn't go so well. They were an embarrassment. If you look back to Afghanistan, or if you look back to the Jimmy Carter days, they were different days. We're a respected country again, like
maybe like never before. These highly trained warriors operating in collaboration with U.S. law enforcement caught them in a very ready position. They were waiting for us. They knew we had many ships out in the sea, just sort of waiting. They knew we were coming. So they were in a ready, what's called a ready position, but they were completely overwhelmed and very quickly incapacitated. If you would have seen what I saw last night, you would have been very impressed. I'm not sure that you'll ever get to see it, but it was an incredible thing to see. Not a single American service member was killed, and not a single piece of American equipment was lost. We had many helicopters, many planes, many people involved in that fight. But think of that, not one piece of military equipment was lost, not one service member was, more importantly, killed. The United States military is the strongest and most fearsome military on the planet by far. With capabilities and skills our enemies can scarcely begin to imagine. We have the best equipment anywhere in the world. There's no equipment like what we have. And you see that even if you just look at the boats. You know, we've knocked out 97% of the drugs coming in by sea. 90%. Each boat kills on average, 25,000 people. We knocked out 97%. And those drugs mostly come from a place called Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that probably won't have to do. This partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be involved with because of what we were able to do and accomplish, will make the people of Venezuela rich, independent, and safe. And it will also make the many, many people from Venezuela that are living in the United States extremely happy. They suffered. They suffered. So much was taken from them. They're not going to suffer anymore.
the illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solis, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, the many, many Americans. Hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now, they're on a ship. They'll be heading to, ultimately, New York. And then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. But we have people where the overwhelming evidence of their crimes will be presented in a court of law. And I've seen it. I've seen what we have. It's both horrible and breathtaking that something like this could have been allowed to take place. For many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America, threatening not only our people, but the stability of the entire region. And you all saw it. In addition to trafficking gigantic amounts of illegal drugs that inflicted untold suffering and human destruction all over the country, all over, in particular, the United States. मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि अमरीकी तेल की कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी, वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली तक मामलात अमरीका चलाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका वेनेजुएला पर दूसरे हमले के लिए भी तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली तक मामलात अमरीका चलाएगा। उनकी हिदायत पर अमरीकी फ़ौज ने वेनेजुएला में एक गैर मामूली ऑपरेशन किया। ये भी कहा कि निकोलस पर अब अमरीका में नार्को टेररिज्म का मुकदमा चलेगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि उनको और उनकी बीवी को अब न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। वेनेजुएला में ऑपरेशन में कई जहाज़ों, कई हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली तक मामलात अब अमरीका चलाएगा। अमरीकी तेल की कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी और इस मुतालिक वो गुफ्तगू कर रहे थे। On average 2 a week in Washington, our capital. We don't have that anymore. The restaurants are opening. Everyone's happy. They're going, they're walking their daughters, they're walking their children, their wives, they walk to restaurants are अमरीकी opening सदर all over डोनाल्ड ट्रंप Washington. की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली तक मामलात अमरीका चलाएगा। अब से कुछ देर पहले उन्होंने वेनेजुएला के सदर की तस्वीर भी जारी की थी।